Assalamualaikum and good morning to everyone. We are going to study our third lecture on psychoanalysis or psychoanalytic theory of literature. Already we have studied two lectures on this one. In the first lecture, we studied about what is the meaning of psychoanalytic theory of literature. And for that, I taught you that we must need to know about psychology before we go to the application of the same into literature. And in second lecture, we studied about two different approaches of psychology that we use when we are studying literature with respect to psychology. Number one approach was Sigmund Freud approach, or that is called Freudian approach. And the number two approach was about the Carl Jung. This is actually called Jungian approach also. And today we are going to study about the summary of all the points that we have covered in our first two lectures. Plus, we'll study some benefits and some disadvantages of using psychoanalytic approach to our literature. So three things we are going to study today. Summary of our previous two lectures, benefits of psychoanalytic theory or psychoanalytic literary review, and the third one actually about the losses or disadvantages of using this literary theory to study our literature. Okay, so you people can open the slides on your mobile phone, and also it's shown on the video. Here we go to the summary of the points. First of all, it's mentioned, look for the covert or hidden content or meaning beneath the overt or surface meaning of the literature. The very first purpose of this psychoanalytic theory of literature is to understand the non-descriptive aspects of the novel or of the drama. We need to understand what is not being said or what is actually being implicated instead of the words only, or instead of the things that which are shown only. Like we study in our semantics, there are always presuppositions and there are always entailments. So we need to study that. कि हमें जो चीज़ें नहीं कही गई उनके बारे में देखने के लिए हम साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर को देखते हैं. Second, beta, the second major point in that we understood in our previous two lecture is about pay close attention to the unconscious motives and feelings of either author or characters. I mean, के unconscious motives, यानी slip of the tongues or the things when they are having less control, वो चीज़ें, वो उनकी गुफ्तगू या वो बातें जहाँ उनका कम कंट्रोल होता है, हम उनके बारे में देखते कि उससे हमें क्या पता चलता है. Here we go to the third point. Demonstrate the classic psychoanalytic symptoms in the text. और हम टेक्स्ट के अंदर, तहरीरों के अंदर जो एक क्लासिक एनालिटिकल सिम्टम्स है, जो यानी साइकोलॉजी की बिल्कुल बुनियादी और जो इब्तदाई के जो मामलात हैं उनको हम देख रहे होते हैं. Such as the oral, anal or phallic stages and the Oedipus complex, etc. Next point, analytic literary history is at a one psyche. If we talk about all the analytical history, we will study that this is one psyche only. It's clear. Here we go to the last point. Prioritize psychodrama. Psychodrama means we will talk about, or we will study that what are the various types of dramas or fighting and conflict going on between the different characters. यानी ड्रामे के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ किरदारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम देखते हैं कि उसके पीछे साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्या होते हैं, क्यों जो है वो कैरेक्टर्स और किरदार जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, and what are the problems behind. Just clear? Now we are going to study about the positive sides or the positives of psychoanalytic theory. हम इसके देखेंगे बेनिफिट्स बेटा कितने इस थ्योरी के बारे में, कितनी जो है वो इससे हम किस तरह के टेक्स्ट को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह के टेक्स्ट को हम जो है वो इससे बेहतर तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते, यानी इसके लॉसेस भी देखेंगे. तो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ साइको एनालिटिक थियरी इज दैट, इसका जो सबसे पहला बेटा बेनिफिट है, इट फोकसेस ऑन द ह्यूमन प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट फॉर्मल वंस. ये इंसानी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो फोकस करती है, सिर्फ रस्मी बातों तक या रस्मी प्रॉब्लम्स तक नहीं. जो एक्चुअली जो डीप हिडन जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उसको अटैक करती है. हम वो चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं जो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आती. इसके लिए एवरीबॉडी वी गो. It is a very useful tool for understanding literary works in which the characters have obvious psychological issues. ये बेहतरीन एक तरीकाकार है जिसमें हम उन
यानी ड्रामों को, उन नॉवेल्स को समझते हैं जहाँ करेक्टर्स जो है उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल सेटबैक्स होते हैं, कुछ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह से किरदार जो है वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं रहे होते। तो हम उनके अंदर इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करके साइको एनालिटिक थ्योरी को तो उसको समझ सकते हैं। Here we go. It may be applicable to real life, emotional, mental or relational situations. अगर हमें अच्छी तरह साइकोलॉजी आ जाए, अच्छी तरह हम जो है वो इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाए, तो हम इनको रियल लाइफ में भी देख सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं. बिफोर दैट देयर इज वन अनदर पॉइंट, इट्स इजीली अप्लाई टू वर्क्स दैट आर हाईली सिंबॉलिक. हम इनको आसानी से उन कामों के ऊपर भी बेटा अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल्स है, जिनके अंदर अलामतें हैं, जिसमें अंदर रिटर्न जो है चीज़ें बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दी वेटिंग फॉर गॉडेट. ये एक ड्रामा है, रशियन ड्रामा, जिसमें क्या होता है, गॉडेट जो है वो एक कोई शख्सियत होती है, उसका इंतजार करते होते हैं दो कैरेक्टर्स, पोजो एंड एक और कैरेक्टर होता है उसमें. वो क्या करते हैं, वो सुबह से आते स्टेज पे बैठते हैं, उसका इंतजार करते रहते, दोपहर हो जाती, बातें करते रहते, शाम हो जाती, गॉडेट कोई नहीं आता. फिर वो दोनों घर चले जाते हैं. दूसरे दिन फिर दूसरा दिन शुरू होता, फिर वो किरदार स्टेज पे आते, इंतजार करते रहते गॉडेट का, दोपहर हो जाती, शाम हो जाती, गॉडेट कोई नहीं आता, और इसके साथ ड्रामा खत्म, फिनिश. अब इसके अंदर जो चीज़ दी गई है, अब इसमें अपेरेंटली दो लोग स्टेज पे आ रहे हैं, बैठ रहे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे जा रहे हैं. वी डोंट हैव एनी apparent understanding of the concept. But if we go to the psychological aspect of the drama, we come to know that they are actually portraying the stupidity and absurdism of the modern life, when people are waiting for things to happen and they are not happening at all. कि लोग चीज़ों के होने का इंतज़ार करते रहते हैं. लोग जो है ना वो ये नहीं, यानी खुद एक्शंस की तरफ नहीं जाते, तो एट द एंड चीज़ें भी नहीं होती और वक्त भी सारा ज़ाया हो जाता है. इसके अलावा और भी इसके डेरो डेर एस्पेक्ट्स हैं. इसी तरह हमें बहुत ज़्यादा नावल्स और ड्रामाज ऐसे मिलते हैं जिसके साइकोलॉजिकल जो साइड होती बड़ी स्ट्रॉन्ग होती. बाद में आपने देखा होगा, एक पिक्चर है, लाइन्स लगाई हुई है और वो पिक्चर जो है वो मिलियंस में सेल हो रही है. हाउ इज इट हैपनिंग? यानी वो एक आम बंदे को समझ ही नहीं आएगी और वो लोग उसके लिए यानी लाखों रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं. वाई दे आर गिविंग? एक्चुअली बिकॉज देयर इज अ डीप साइड हिडन बिहाइंड दैट पिक्चर. और अक्सर ऐसे हमारे पास जो तहरीरें आती है जिसका साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है, सारी पोइट्री जॉन डन की जो हमने पोइट्री पढ़ी, द साइकोलॉजिकल पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली. तो ये वो बात की जा रही है कि स्पेशली दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द टाइप्स ऑफ राइटिंग व्हेन दे अपरेंट देयर यानी द थिंग्स दैट इज वेरी मच विजिबल, जो नजर आने वाली चीजें वो कम होती हैं. तो फिर उसमें ये अप्रोच जो है ना, दिस इज वंडरफुल एक्चुअली. आई एम सॉरी. Here we go to the next one. It's fun to read literature and get the work about the sects and crazy people. कहते हैं कि ये एक फन भी है और एक मजे की बात है कि हम लिटरेचर को पढ़ के फिर हर बंदा अपनी अपनी राय देता रहे कि वो क्या सोचता है, किरदारों के मामलात कैसे चल रहे हैं, ऑथर जो है वो कैसा है, किस तरह किरदारों का आपस में इंट्रैक्शन है. इट्स नॉट ओनली a sort of passive reading or passive viewing. Actually, the people are involved and they make discussion with each other and they get ideas, then they explore their ideas, they work on that and they then purify their ideas. Here we go to the last slide at the last part of our lecture of 3 lecture series. And in this part we are going to study about the negatives or the disadvantages of psychoanalytic approach. देखिए, क्वेश्चन जो बेटा आपको आ सकता है वो दोनों तरीके से आ सकता है. They can ask you about what is the psychoanalytic literary theory. Write down about 2 different approaches. They can also give you information or give you the names of some fundamental concepts of Freudian psychology that we use in psychoanalytic theory, and the concepts of Jungian psychology that we use in our theory. And they can ask you to explain these terms in your own words. You can explain them and give examples that we have already studied. They can also ask you what are the benefits or losses of psychoanalytic theory. And this is a general question that can be asked related to any theory that we have studied. लेकिन इसका क्वेश्चन कम आता है बेनिफिट्स और लॉसेस का. ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी और उसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में ही आता है, और ना ही थ्योरी की एप्लीकेशन हमें आती है, बिकॉज वी आर एट द मास्टर लेवल, नॉट एम आर PhD level. Here we go. The very first negative point of psychoanalytic theory of literature is very easy to fake. कहते बड़ा आसानी से हम जो है वो जो मर्जी कह दे कोई. There is nothing to verify either something which has been said or which was said was actually right or not. We don't have a type of yardstick to measure or to match with the reality. तो जिसके ज़हन में बेटा जो आता है वो क्या सकता है. So it's very easy to fake. Number 2,
Critics can try to diagnose dead authors writing and end up not the best evidence for psychology. बहुत ज़्यादा बेटा जो तहरीरें हैं उनके author जो है they are gone, यानी they are not with us, वो हमारे साथ नहीं है, वो फोत हो चुके हैं. तो उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करना इट्स नॉट इजी. इफ यू टॉक अबाउट जेफरी चासर, यू आर टॉकिंग अबाउट 600 years ago. How you will know about the psychology of Jeffrey Chaucer? Not possible until we have some evidence about his life, about his biography. लेकिन वो evidence ठीक है कि गलत है, we need to verify that before we can get conclusion from them. उनको फिर verify करें तो it's a long procedure. तो जो आज से बेटा फोत हो चुके, it's not easy for us to get the psychological makeup of these authors in front of us before we analyze a piece of literature. Here we go. It's extremely subjective. Extremely subjective मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हम आइडियाज दे रहे हो. देयर इज नथिंग ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है, चीज़ें नहीं. इसमें वही कुछ होता है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है, जो एक्चुअल रियलिटी इसमें होती है, जो हमें जो है वो नज़र आ रही है, उसको हम नहीं देखते ऑब्जेक्ट्स को, बल्कि हम उसके पीछे छुपे हुई चीज़ों की तरफ चाहे वो रहते. तो दैट्स वाई इट्स एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव, यानी इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें जो हमें नज़र, जिसको हम जो है वो कर रहे होते हैं एक्सप्लोर. It assumes that all human beings are driven by repressed illicit sexual desires and is therefore a very negative view of human nature. According to Freudian psychology, कहता है कि सारी चीज़ें फिजिकल प्लेयर के ऊपर बेस कर रही होती हैं, तो इसकी वजह से ये बड़ा ही एक मनफी नुक्ता नज़र है इंसानी नफ्सियात के बारे में, जो कि ठीक नहीं है. Is clear बेटा? With this we have come to the end of our last lecture, that is lecture number 3. So we have finished up to now 3 lectures about our psychoanalytic theory of literature. If there is any question, anybody has question, especially our viewers online who watched our lecture series on YouTube, you people, if you have any comments related to this theory or you need to anything about it, you can write your comment or question in the question box, in the comment box, and we will reply that happily. Thank you so much. Wish you all the best.